A very warm welcome to you all. We are gathered here for the session Qawwali music and Sufi poetry tradition by Mahmood Jamal. Moderated by Sarwat Mohiuddin. The total duration of this session is 60 minutes. We would appreciate it if complete silence is observed while the session is in progress. A question and answer session will be held at the end. Please raise your hands and the microphone will be brought to you. Please keep your questions short and precise and refrain from making a statement. And our moderator is Ms. Sarwat Mohiuddin. She's a poet and prose writer in both Punjabi and Urdu languages. She was born in Lahore and she holds a master's degree in Punjabi literature from the University of Punjab. Ms. Sarwat has to her credit a number of papers on the life and works of the great Sufi poets of Punjab, as well as on Punjab culture and folk traditions. She has published 4 volumes of poetry. Her travelogue, Raat Ki Dhoop, is a detailed study of Swedish and Pakistani culture, customs, and traditions. She is a visiting lecturer at various national and international institutes and universities. Ms. Sarwat has represented Pakistan at conferences and seminars internationally and has been honored with various awards both nationally and internationally. So over to you, Ms. Sarwat. Okay, Mahmood Jamal Saab, welcome to Pakistan. As you know, he resides in London most of the time. And Mahmood Jamal is a poet and a filmmaker, basically, but has a long tradition and connection with Qawwali. So I would like you to first give a brief background of Qawwali, please, to the audience, and then we'll go to the questions. Can you hear me? नहीं, I've got 2 mics. अच्छा, कौन सा चल रहा है? ये. You see, one of the things was that I was going to make a presentation on PowerPoint plus video plus sound. Unfortunately, because of technical matters which are beyond us, I've been unable to do that. That's why I'm wearing this mic, and I'm going to go to my computer and then try to sort of share with you some of the different things. But let me start by saying, first of all, ये आपने कहा कि लंदन में रहते हैं, लंदन में भी रहते हैं, कराची में भी रहते हैं. देर से काबे उठ के आए मीर, जिसको चाहे खुदा खराब करे. तो मैं अब तो यहीं आ गया हूँ. तो ये कव्वाली का जहाँ तक सिलसिला है, सबसे early evidence we get of what is known as sama in 12th century Baghdad. वहाँ से एक काफ़ी developed form में ये जिसको महफिल समा कहते थे वो होती थी. उसमें म्यूज़िक भी होती थी और उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी होते थे. उसके बाद जब सूफिया कराम हिंदुस्तान या हिंद पाक की सरज़मीन पे आए तो फिर वहाँ से नाम कव्वाली पड़ा एक स्पेशल टाइप ऑफ म्यूज़िक का. सॉरी, आई विल बी गोइंग बिटवीन इंग्लिश एंड उर्दू. ना मैं इंग्लिश जानता हूँ अच्छी तरह से, ना उर्दू, तो अब इसमें कन्फ्यूजन मुझे भी हो जाता है. तो उसमें ये हुआ कि सबसे पहले सूफिया कराम ने जो खानकाहों में म्यूज़िक होती थी, वो जो महफिल समा होती थी, उसके ज़रिए कव्वाली डेवलप हुई. तो इट वुड बी quite accurate to say the Qawwali is a special type of music that developed around the khanqahs of the subcontinent. तो अब सबसे मशहूर जो
कव्वाली के जिसको कव्वाल खुद अपना मतलब कि पीर और गुरु मानते हैं, वो है हज़रत अमीर खुसरो रेलवी, जिनकी वफ़ात आई थिंक ही कवर्ड टू he died I think in 1325 which is the 14th century। तो उस ज़माने से कव्वाली एक फॉर्म हो गया, म्यूज़िकल फॉर्म। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि महफिल सिमा और कव्वाली के इर्द गिर्द काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी चली थ्रू आउट द हिस्ट्री कि ये जायज़ है, नाजायज़ है, सही है, गलत है, तो उस पर कंट्रोवर्सीज चलती रहीं। इमाम गज़ाली ने भी इस पर तबसरा किया। आई विश आई कुड शेयर विथ यू बट बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई पावर पॉइंट आई कैन नॉट। अच्छा, और उसके बाद फिर यहाँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में 18th 19th सेंचुरी में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही, लोगों में आर्गूमेंट्स हुए, डिस्कशन हुए। इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। अब कव्वाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो इस्टेब्लिश्ड हो गई अपनी जगह पे, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसका एक अपना म्यूज़िकल फॉर्म हो गया। So Puritans of all sorts have looked down on Qawwali in different ways, yet it has survived as a musical form, as a form of mahfil-e-sama, as a form of public entertainment, as a secular form, as a religious form, as a form of Sufi expression. But if we look at classical Qawwali, it developed from the idea of mahfil-e-sama, and it acquired a very specific form in the Indo-Muslim subcontinent. जी महमूद साहब, I would like to ask you, actually Qawwali तो came to the subcontinent with Sheikh Mohiuddin Chishti, who is better known as Ajmer Sharif, you know, and he came to the subcontinent in 1191, and उस वक़्त की ज़रूरत ये थी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस्लाम फैलाना था, तो क्योंकि हिंदू रिलीजन में गाना और म्यूज़िक बहुत ज़रूरी था उनके रिलीजियस फेस्टिविटीज़ के लिए। सो इसलिए मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने यहाँ पे जिस वक़्त उन्होंने, हालांकि उनसे पुराना सिलसिला जो अगर हम सिलसिले देखें कादरिया सिलसिला, उसमें म्यूज़िक अलाउड नहीं था, मगर अजमेर में उन्होंने जिस वक्त ये शुरू किया, एंड दिस वाज लेट 12th सेंचुरी, तो उस वक्त उन्होंने म्यूज़िक को बीच में लाए, क्योंकि सिर्फ यही एक ज़रिया था, म्यूज़िक के बगैर इस्लाम फैलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ट्रेडिशन थी यहाँ पुरानी म्यूज़िक की। और अमीर खुसरो तक तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अगर सिलसिले से देखा जाए तो उनके मुरीद थे हज़रत बख्तियार काकी, जिनके आगे मुरीद थे बाबा फ़रीद, और उनके मुरीद हुए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, और उनके मुरीद थे आगे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो तक पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड ये हो गया था। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले शुरू में तो अरबिक और पर्शियन ट्रेडिशन ही थी, अमीर खुसरो ने इसमें एक, जिसको वो हिंदवी ज़ुबान कहते थे, उन्होंने, जो कि कुछ पंजाबी और उर्दू का मिक्सचर था, उसमें उन्होंने कव्वाली पहली दफ़ा लिखी। तो उसको आप इस ट्रेडिशन में ये चेंज जो है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहना गलत है कि सिर्फ म्यूज़िक हिंदुस्तान में हुई इसलिए कि जलालुद्दीन रूमी नहीं, तो ये ना समझा जाए कि सिर्फ हिंदुस्तान में चूँकि म्यूज़िक होती थी इसलिए कव्वाली शुरू हुई। समा की जो महफिल थी उनमें म्यूज़िक और गाना होता था, और भी कल्चर्स में, जैसे कि जलालुद्दीन रूमी की एविडेंस है आपके सामने, म्यूज़िक होती। रूमी का तो वही टाइम है ना जी, नहीं, टाइम तो वही है, मगर म्यूज़िक कहीं, वो तो कहीं और थे ना। तो ये कि हिंदुस्तान में चूँकि म्यूज़िक एक हमारे उसका जुज़ थी महफिल समा का, पहले भी और जब हिंदुस्तान में ज़्यादा हुई और कव्वाली का फॉर्म ले लिया उसने लेट 12th सेंचुरी। तो अब ये ट्रांजिशन ऑफ द लैंग्वेज, इसके ऊपर मेरा सवाल है, इसको आप कैसे लेते हैं? ट्रांजिशन ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम पर्शियन एंड अरबिक टू उर्दू एंड हिंदवी,
एट द टाइम ऑफ अमीर खुसरो, इसको आप कैसे लेते हैं? I mean, I'm not interested in a linguistic discussion, you know. You see, देखिए मैं तो नहीं, मैं ये कह रहा, मतलब है पॉपुलैरिटी ऑफ द कव्वाली हाँ पॉपुलर नहीं सही है सही आफ्टर अमीर है खुसरो, सही सो है दैट सही इज व्हाट आई सही एम है आस्किंग। तो उसमें ये हुआ कि वो तो जब ज़बान हिंदवी डेवलप हुई, जिसे हिंदवी कहते हैं, वो पूर्वी का मिक्स था और अवधी का मिक्स था और पंजाबी का मिक्स था और हिंदी का मिक्स था, भाषा का मिक्स था। वो तो उर्दू ज़बान की एक वो तारीख़ है अपनी। मगर यहाँ जो हुआ कि चूँकि कव्वाली starts off as a devotional form of music, डिवोशनल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक तो हिंदुस्तान में पहले से थी जी। और उसमें भजन होते थे। तो कव्वाली में बहुत से भजन भी गाए जाते हैं उन कल्चर्स में। आप कुछ सुनवाना चाहेंगे? हमारा ऑडियो तो चल रहा है, वीडियो नहीं है। ऑडियो चल रहा है जी। हाँ, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं असल में ये जो मैं कहना आप लोगों से चाहता हूँ कि इफ़ यू थिंक दैट यू कैन लर्न समथिंग न्यू थ्रू दिस प्रेजेंटेशन, then you might be disappointed. But if you think that you will learn something you already know in a different way, then I hope that this will work very well. You know? Right. तो कव्वाली का जो मैं प्रेजेंट करना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पा रहा हूँ, मगर साउंड में कर दूंगा मैं आपको, ताकि कव्वाली का क्लासिकल जो फॉर्मेट है वो होता है, नॉर्मली हम से शुरू करते हैं, फिर नात होती है, फिर कौल होता है, फिर मनक़बत होती है। दिस ए क्लासिकल फॉर्मेट ऑफ कव्वाली जो शुरू होती है हम से या नात से, फिर कौल से, फिर मनक़बत होती है जो दिस इज़ डिवोशनल सॉन्ग्स टू सेंट्स। सो इट स्टार्ट्स विद हमद, नात विच इज़ प्रेज ऑफ द प्रॉफिट, देन कौल विच इज़ a standard in this part of the world, where इस हज़रत अली की शान में है, और उसके बाद और दूसरे जो जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी वगैरह, मोहिउद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद वगैरह के बारे में होती हैं। उसके बाद आता है मारिफत, आरिफाना कलाम। Now this is where I want to take you. So it starts with devotional and ends with love. And why I wanted to do this is because the essence of the कव्वाली का जो एसेंस है वो म्यूज़िक नहीं है, वो उसका कलाम है। जब तक उसके कलाम से आप वाकिफ़ नहीं होते हैं तो फिर तो देखिए, माई ओन म्यूज़िकल टेस्ट रेंज फ्रॉम जैज़ टू जैज़ में जॉन कॉल्ट्रेन, आची शेप, चार्ली मिंगस, and rock and pop and everything. But कव्वाली का एक स्पेशल जो चीज़ मुझे मिलती है कव्वाली से, वो स्पिरिचुअल होती है ज़रा से। तो इस वजह से मैं कव्वाली के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कव्वाली वाज एट द एज ऑफ 5 एंड देन आई ड्रिफ्टेड अराउंड द वर्ल्ड एंड तरह तरह की म्यूज़िक सुनी, हर तरह की, और आखिर में but I found that Qawwali gave me something which other music could not give me. So that may be my own particular background, makeup, whatever. तो अब मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ एक क्लासिकल फॉर्मेट, एंड आई टेक यू थ्रू इट ऑफ व्हाट Qawwali is. और उसमें I can't play the whole songs, but I'll play excerpts. Now इसमें भी एक स्पेशल चीज़ है कि सबसे जो अपने ज़माने जो सबसे बड़े कव्वाल थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में माने जाते थे, यहाँ तक कि मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से भी इसकी बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि मुरली से बड़ा कोई कव्वाल नहीं है। उसका नाम मुरली था, असल नाम कुछ और था, मगर मुरली के नाम से जाने जाते थे। तो उनकी मैं आपको कुछ चीज़ें सुनाऊंगा और फिर वील टेक इट थ्रू द थिंग। बट बिफोर वी गो देयर, आई वांट टू जस्ट टेल यू अबाउट the poetry itself. पहले तो कव्वाली फ़ारसी में होती थी ज़्यादा, अरबी का ज़्यादा
रवाज नहीं था, इसलिए कि बड़े बड़े जो शोरा थे जैसे मौलाना रूम, हाफिज़, जामी, सादी, इराक़ी, अहमद जाम, बहुत बड़े बड़े शोरा गुज़रे हैं। उनकी जो गज़लें थीं वो कव्वाली में गाई जाती थी, आज तक गाई जाती हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट कि आप कहीं भी जाएंगी, अमीर खुसरो देहलवी, उनकी कव्वालियाँ आज भी सुनी जाएंगी। ये असल में आरिफाना कलाम में इंक्लूड की जाती हैं। हालांकि मौलाना जामी की नातें बहुत मशहूर हैं और वो भी कव्वाली में गाई जाती हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय प्रेजेंटिंग यू विद अ नात sung by one of the Qawwals in Firangi Mahal, Lucknow, called Azimullah. And मशहूर नात है, आप सुन लिए और फिर उसके बारे में आगे उससे बढ़ते हैं। Because what I wanted to do is to share the experience of a Qawwali with you. Unfortunately, the video and the thing has not been able to allow me to do that. अच्छा, इसके बाद पहले से मैं आपको ज़रा से तबर्रुकन एक नात सुनाता हूँ। उसके बाद what we'll do is go into a discussion of the poetry itself and the is the sound working? Sound? Any sound. Sound. आवाज खोलें। ये बहुत गड़बड़ हो गया है यार। I'm sorry, but अबद तक है जारी तेरा पैगंबर से, अबद तक है जारी ओ तेरा पैगंबर, ओ तेरा पैगंबर, ओ तेरा पैगंबर से अबद तक है जारी कराबार ऐसा खुदाई है सारी
जी महमूद साहब आइए। That एक एग्जाम्पल था जी वो जी मैं ज़रा ये बता दूं कि जो आपने फरमाया कि पोइट्री का पता होना तो लाजमी है, मगर कव्वाली की जहाँ तक रिदम का ताल्लुक है वो और ये फॉर्म जो है कव्वाली की, इट्स मोर देन व्हाट इज़ बीइंग संग, क्योंकि सब लोगों को पर्शियन की मसलन समझ नहीं आती, लेकिन जैसे नुसरत फ़तेह अली बाहर जाके गाते रहे हैं, तो इवन फॉरेनर्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट आइदर पर्शियन और उर्दू और पंजाबी, उनके ऊपर भी एक वजद की जो कैफियत है वो तारी होती है। इट्स बिकॉज ऑफ द रिदम, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक, बिकॉज द वे इट डेवलप्स। कव्वाली में शुरू में जब लोग बैठते तो उनकी सेंसेस के ऊपर वो असर कर रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। इट्स बेसिकली द रिदम विच मेक्स देम ट्रांसेंड इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन ऑल टुगेदर। तो वो म्यूज़िक और रिदम जो है ये तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे मेडिटेशन उसकी है। अपनी जी रिदम है। तो इसमें इवन यहाँ पे पाकिस्तान में जैसे आजकल बहुत सारे आजकल की जनरेशन को मेरा ख्याल है फ़ारसी की उस तरह समझ नहीं आती, लेकिन असर वही होता है, असर तो वही होता है कव्वाली सुने, आप जिस किसी की भी कव्वाली सुने। हाँ, तो उसका जो पर्पस है, जो कव्वाली का पर्पस होता है टू क्रिएट एक्सटेसी इन द लिसनर। जी, तो उसमें that has a lot to do with the rhythm also. रिदम ऑफ एंड द कव्वाल और लिसनर का जो रैपो होता है उससे वो डेवलप होती है। तो कव्वाली हैज इट्स ओन स्पेसिफिक। माय क्वेश्चन टू यू इज कि अब आजकल हाउ डू यू सी दिस चेंज कमिंग, क्योंकि जितने हमारे यहाँ के आजकल के जो बड़े बड़े कव्वाल थे, मसलन गुलाम साबरी थे, अब उनके बेटे आ गए हैं, नुसरत फ़तेह अली थे, अब राहत फ़तेह अली आ गए हैं, एंड दे हैव ब्रॉट चेंजेस इनटू द कव्वाली, इनटू द फॉर्म ऑफ कव्वाली। सो हाउ डू यू टेक दिस, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी मोर पॉपुलर विद दीज चेंजेस, एंड व्हाट आर एग्जैक्टली द चेंजेस? कैन यू प्लीज आंसर? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी इट्स ओनली रिसेंटली दैट वी हैव started having a lot of qawwalis in Urdu. Urdu was not the language of qawwali previously. पंजाबी also जी, बुल्ले शाह का कलाम तो आजकल बहुत पॉपुलर है। राहत फ़तेह अली और नुसरत फ़तेह अली ने तो बहुत गाया बुल्ले शाह को। but Punjabi is older in terms of its inclusion in the qawwali than Urdu. But I'm talking about Persian and either Urdu or mostly Punjabi. What do you think these changes are, and how are they affecting
the new generation? I think Qawwali, as it has grown out of the khanqahs and the shrines and other places and moved into the secular area of television, of stage, of weddings, etc., it has obviously adopted a different form. It has become more entertaining. But still, if you hear the great qawwals, even Nusrat Ali Khan Sahib used to sing Jalaluddin Rumi, Bulle Shah, all these great poets, you know. तो वो जो the basic जो कलाम है कव्वाली का वो it is intact in all the qawwals, whoever they are. They may sing different things for television, for entertainment, for other things, but they all know what the real kalam of Qawwali is. There has been a definite change in the form. Yes, of course, there is a different change in the राहत form. फ़तेह अली ने बहुत सारा sort of modernized version of the music has been brought into it, but yet the rhythm is still there. That is why it affects. Because Qawwali has taken on a form of its own, and by taking on this form, it has managed to become much more popular. So it's no longer just a religious form of music. It is a form of music that people listen to for entertainment, for enjoyment, because of the rhythm of it. And as you know, every Qawwali has to have tolak, tabla, and clapping. Clapping is essential part of Qawwali. I can't imagine a Qawwali without clapping. So these are all rhythms created to get to that stage of ecstatic, feeling of ecstatic or ecstatic behavior. तो अब ये जो सवाल पैदा होता है, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये मारिफत क्या चीज़ है? What are the listeners experiencing? What are they trying to get to, or if anything? सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप उल्टा मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ये तो आप ज़रा ज़्यादा डिटेल में बताइए। हाँ, तो ये वरना मैं तो बाद में बताऊँ। मारिफत is a very difficult concept to define. Of course, you see, if you look at why I wanted to share the structure of Qawwali with you was in the hope that as we go along, you will reach that stage of knowing. But maybe a few of us would. But since we can't do that, uska asil mein the essence of Qawwali, or essence of all the poetry of Qawwali is love. Now, again, we come at a word which is not easy to define. Now, what is love? Love can be human love, it can be devotional love, it can be selfish love, it can be transgressive love, it can be any kind of love. You know, it could be love for the divine, love for the prophet, love for the saints. So, but the Qawwali experience leads us towards that recognition that where we get connected with something more than ourselves, and there's no better teacher than love itself. So this is why जो फारसी का जितना कलाम है क़व्वाली का, it deals with the subject of love in all its various forms. And in order to really appreciate its many dimensions, it is not something that other people can tell you about, it is something you have to experience yourself. And unless you have experienced it, that feeling of ecstasy which comes from this feeling of being connected to something larger than ourselves. That's the only way I can put it. So if you have that feeling, and the Qawwal's whole purpose is to make you get to that point. जिसे हम हाल कहते हैं, हाल भी ना कहें, कोई और बात कहें, that moment of great joy and ecstasy is what Qawwali aims towards. So the rhythms, the music, the words, the repetition of phrases, all this is towards one goal, the goal that we will gain self-knowledge as we sit listening to it, either through devotion to a saint, devotion to Hazrat Ali, devotion to the Prophet, and ultimately, you see, the best
poetry that we have of somebody like Jalaluddin Rumi or Bulle Shah or Hafiz or Sadi. जैसे सादी का एग्जाम्पल है बर सरीर दिल शाहम शौकत गदाइन अस्त गर्द कुए माशुकम रुतबे रसाइन अस्त साखिया बस एहराम तौफ़ो मरवा मी बंदी रूए यार माँ बेनिगर काबे सफ़ाइन अस्त. So it goes beyond the orthodox religious confines. The poetry itself and the Qawwali itself takes us to that point of recognition of where कि वो जुल्फ़े शबगू है कुफ्र सामा, वो रूए अनवर है ऐने इमा, अजीज़ दोनों है दिल को मेरे, कभी मैं काफिर कभी मुसलमान. So एन सरबत का है कि बुल्ले शाह का है, खुद कहा बुल्ले शाह ने कि बुल्ले की जाना मैं कौन. तो दैट मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग of not knowing and knowing is where it leads us to. The poetry, the purpose of poetry is to lead us to that moment of knowing and not knowing at the same time. Through the music, through the rhythm, through the feelings. So we reach a point of humility and of self-knowledge. And that is what I feel marifat is. You know, to be able to know and not know. तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान यही है. तो this is the ultimate human effort to arrive to reach the divine. तो हिंदी की एक कव्वाली है, जैसे I could have played it for you. हाय कैसे कटे उमरिया आसे आस में बीती जाए, हमरे नैन दरस बिन तरसे बालम तुम बिन कुछ न सहाय. हाय कैसे कटे उमरिया आसे आस में बीती जाए. How will I spend my life? I am living in hope. But this is at a secular level, at a human level. But at another level, the Sufi idea that the soul must return to God. So as long as we are alive, we are yearning to be reunited with the divine. Which is why we say जब सूफी का इंतकाल होता है वो कहते हैं विसाल हो गया, यानी कि रूह अपनी हकीकी क्रिएटर से जाके मिल गई. तो इस तरह की कव्वाली में होती हैं. तो यू टेक इट एट मल्टीपल लेवल्स. अब जैसे बहुत अच्छी बात कही, आई जस्ट वांट टू कोट दिस फॉर यू. जब म्यूज़िक के बारे में कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो this is a quotation from Abu Hafs Sohrawardi, who died in 1234 AD. और उन्होंने ये कहा है कि music does not give rise in the heart to anything which is not already there. So he whose inner self is attached to anything else than God is stirred by music to sensual desire. But the one who is inwardly attached to the love of God is moved by hearing music to do his will. What is false is veiled by the veil of the self, and what is true by the veil of the heart. And the veil of the self is a dark earthly veil, and the veil of the heart is a radiant heavenly veil. The common folk listen to music according to nature, and the novices listen with desire and awe, while the listening of the saints bring them a vision of divine gifts and graces. And these are the Gnostics, to whom listening means contemplation. But finally, there is the listening of the spiritually perfect, to whom through music God reveals himself unveiled. तो अपनी अपनी सोच से आदमी अप्रिशिएट करता है, सुनता है. कोई इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा. इस मुमलिकत में सब बादशाह हैं. सही. और वो मार्फत जो है ना, मार्फत पे पहुंचना, मार्फत एक्चुअली इज द अल्टीमेट ट्रूथ.
तो मैं आपसे फिर वो पहले वाला सवाल दोहराना चाहती हूँ कि विद ऑल दीज चेंजेस कमिंग इनटू द न्यू कव्वाली, तो इसका आप फ्यूचर कैसे देखते हैं विद द यंगर जनरेशन? क्योंकि अब हमने अपनी अगली जनरेशन को में ये इंटरेस्ट तो देखा है, मगर उसमें जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि वो कंटेंट में या पोइट्री में इतना नहीं जाते। उनके लिए जो आजकल एक फैशन भी है कव्वाली का, उसमें जो यंगर क्राउड होता है ना, वो दैट इज़ इन्जॉइंग द रिदम लाइक दे इन्जॉय एनी अदर टाइप ऑफ म्यूज़िक। तो इसमें जो कव्वाली इटसेल्फ है उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कव्वाली बाय द वे, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू लिटरेचर, टू म्यूजिक, ऑल थिंग। तो हर चेंज में कुछ खोता है आदमी, कुछ पाता है। ये तो नहीं होता कि हर चीज़ खो जाए या हर चीज़ पाई जा सके। whatever change happens in film, literature, music, Qawwali, whatever, you lose something and you gain something also. What is the loss? Loss ये है कि you might lose certain spiritual aspects of it, but this is why I am doing this lecture, you know, and hopefully I'll do it again in other places. So you lose something, but you gain something, because आपको मैं बताता हूँ कि when I was living in London, when I used to watch these big, huge concerts like Live Aid and all that with all the rock, and I said हमारी जो म्यूजिक है उसमें गज़ल और क्लासिकल म्यूजिक इससे compete नहीं कर सकती है, कव्वाली कर सकती है। ये तो you know, young people like rhythm, like songs, like thing. I like it. I'm old, so why shouldn't they? You know, so they enjoy it in a different way, but they need to. Once they start enjoying it, they'll start to inquire. आप समझते हैं? So कोई अच्छी गज़ल आदमी सुनता है, फिल्मी सॉन्ग सुनता है, उसके बाद सोचता है कि गज़ल भी सुनना चाहिए। गज़ल सुनता है तो कहते हैं ये तो और ही चीज़ है, फिर जाके पढ़ता है फैज़ साहब की गज़ल, फिर कहता है ये तो यार ये तो। आप कुछ और सुनवाना चाहेंगी या should we take questions from the floor? Let's take questions from the floor. Anybody who wants to ask a question? जी सर। Somebody, mic है आपके पास? Mic, अच्छा। My name is Haider Ali Dina. Instead of asking question, I would like to comment. Our moderator asked a very important question. What was the effect of fusion on Qawwali music? Now, in my opinion, there are two types of people who listen to Qawwali. Number one is purist, those people who like only the Qawwali to be listened in the traditional way, and the others are the young generation who are not purists and who like to enjoy Qawwali along with the other musical instruments and in the Western type. So you see this and what has brought this fusion? It is the modernization. It is the modernization which has brought this fusion, and not only in music, but as you said, sir, every walk of life. You see, even the films also, producing films. The films are showing Qawwali in the fusion form, in the dance form. So you see, the effect is because of modernization. What is the advantage? Is there any advantage of fusing Qawwali music with the Western music? When Nusrat Fateh Ali Khan was asked this question, he said, well, I have not done anything but to reinforce the base of Qawwali. And I think that due to this fusion, our younger generation has been attracted to Qawwali. And as you said, sir, when they hear, they also ask and inquire, what is it? Thank you. समझा नहीं। But that was more of a comment rather than a question. Is there a question, please? Can we hear a piece of Murli? Yeah, sure. Yeah. So, Okay. is this the last piece you're going to play? Or? Because no, we still have like 20 minutes. Okay. So I you will can
please, if you want to play more. I will see. Normally, we end with Qawwali में जो tradition है, उसमें we end with rang. So I'll play you. This is a classic in itself. Connected है?
I'm sorry, but we didn't have the time. This is really a 2-hour presentation where I was hoping to share with you the whole spectrum of things. अब इसमें एक और मैं सुना दूं आपको जहाँ से आरिफाना गज़ल अमीर खुसरो देलवी की इससे अच्छा है ये है दाता दरबार पे रिकॉर्ड की गई है लेट मी जस्ट एक्सप्लेन ये हज़रत अमीर खुसरो की गज़ल है आमादा बक़त्ल मन आशोक सितमगारे It is a devotional to the beloved. तो उसमें इसी बीमारा द हिजरे तू रंजूरम इसी बीमारा दर हिजरे तू रंजूरम ओ बीमारों के मसीहा तुम्हारे हिजर में हम रंजिश में है तुमको शायद खबर नहीं है जो बीमार का हाल है तो ये एक इसमें जो now we reach in the process of the Qawwali a point of a different kind of poetry, a different kind of language, a different kind of questioning, a different kind of love, which is like it breaks all the boundaries of reason, of constraint, of orthodoxy, and it takes us into a different realm of being. And that being is to be connected with something, the only way I can describe it, connected with something larger than ourselves. तो इसलिए महफिल में जो बात होती है, जो लोगों के साथ सुनने में होती है, वो अकेले सुनने में नहीं हो सकती है. अकेले सुनने में आदमी अपने पर्सनल जो मामलात हैं उनकी भी तशरीह कर लेता है गाना सुन के. मगर जो असेंबली में महफिल समा में जो बात होती है वो एक कलेक्टिव फीलिंग होती है. वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. एंड आई एम श्योर दैट पीपल हु गो टू रेव्स also experience the same thing. क्या साउंड ऑन है भाई? तमन्ना के जारी हुए हमारे और खूब तमन्ना के जारी हुए हमारे इतना ही कहा बस इतना ही कहा बस आशिक हूँ तेरा प्यारे आवाज़ बात ले
अच्छा, एक चीज़ मैं करना चाहता था, जस्ट टू रैप इट अप, इसलिए कि वक्त बहुत कम रह गया है और लोग अगर कोई सवाल करना चाहे तो वो सवाल कर सकते हैं। तो आई जस्ट वांट टू गिव यू डिफरेंट टेस्ट ऑफ मुख्तलिफ जो मैं लाया था, जो कि नहीं आपसे शेयर कर सका। जस्ट वेरी क्विकली, इसी पे हम लोग ख़त्म भी कर देते हैं कॉल पे। दिस अगेन मुरली, सो यू माइट एंजॉय इट।
Sorry, it took me a long time to switch it off, but I couldn't stop. Thank you, sir. But we have to, as time is running out. But I am, finally, what I'd like to say to you all is that I wanted to share not knowledge, but experience with you. And because of technical reasons, we have not shared the experience. To some extent we have, but what we have shared is what we feel. I mean, Sarwat Sahaba has great knowledge of Sufi poetry and etc. But I wanted to actually lead us to that point where, देखिए, Qawwali has been under attack from many sides. Musical Puritans think it's not really a great form of music. The religious Puritans think it shouldn't be there. The poetry Puritans think that it should not, it's not just great poetry. But that's where they are wrong, you see. In terms of poetry, the classical ghazals, I mean, are sung at least in Persian. उर्दू में नहीं है, मगर फारसी की जो गज़लें हैं वो तो they are some of the greatest ghazals ever written. So one has to somehow break that barrier of getting, ज़रूरी नहीं कि आदमी फारसी जाने, मैं फारसी नहीं जानता हूँ, थोड़ी बहुत जानता हूँ, मगर अगर वो गज़लें जो हैं कव्वाली की वो आप उनका समझ लें तो your experience of Qawwali will be a different experience. Right. So before winding up, do we have any question? जी. हेलो, ये आपने फरमाया कि कव्वाली के लिए जो सेंस है म्यूज़िक के अलावा उसकी पोइट्री समझना बहुत ज़रूरी है. पोइट्री के बारे में बात की आपने, उसको समझना पोइट्री बहुत ज़रूरी है. आप कव्वाली का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते आप. जी. इस वाले देखिए कि आजकल जो कव्वाली हो रही है उसमें जो लोग शिरकत करते हैं उसको लोग अक्सरियत से म्यूज़िक समझते हैं और वो लोग तवज्जो करने लगे हैं जो समझते हैं उसकी पोइट्री. क्या कोई ऐसी कोशिश की गई है, की जानी चाहिए जिसमें जो कव्वाली के कौल हो, रंग हो और जो अच्छी अच्छी सेलेक्टेड कलाम है उनका तर्जुमा किया जाए या उनका कमेंट्री कोई दे लग जाए. तो आई फील जो आजकल फिजाए मुल्क में दहशत गर्दी की इसमें कव्वाली का फ़रोग मिले तो शायद हालात बेहतर हो और हम शायद हम जा सकें अमल की तरफ. सर ये तो आजकल हो रहा है, जो लोग रिकॉर्ड वगैरह निकालते हैं कव्वाली के, जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के, तो उसमें उसका तर्जुमा भी अंग्रेज़ी में लगा देते हैं साथ. अच्छा. ताकि लोग समझ सकें. तो ये एफर्ट्स आर बीइंग मेड इन दैट डायरेक्शन. सो डॉक्यूमेंटेड नहीं है गालिबन ये. जी, डॉक्यूमेंटेड नहीं है कहीं. डॉक्यूमेंट्री किताब की शक्ल में नहीं है किसी. नहीं, किताब की शक्ल में नहीं है. मैंने जो किताब लिखी थी इस्लामिक मिस्टिकल पोइट्री, मगर वो तो बिल्कुल अंग्रेज़ी में है, उसमें फारसी वारसी या उसका तर्जुमा तो सबका है, लेकिन उसमें शो की जगह नहीं थी तो ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं डाल सके. मगर इंशाल्लाह ये काम करेंगे एक दिन. जी. Any other question? Yes. Please be brief. We only have 1 minute. जी जी. जी जी ये है. जैसे जी जी जी, जैसे और बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग समझ भी लेते हैं. जैसे है कबीर की है, भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी. भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं तो राम झपन से छूटी. हर बिसरे मोरे सर से टली बला. अब ये देखिए ये कहाँ से कहाँ ले गए हैं कि भला हुआ मोरी गगरी फूटी. कि एक आप तो इसको विजुअलाइज कर सकती हैं कि एक औरत जा रही है अपने सर पे गगरी लिए हुए और वो गगरी टूट गई.
अब उसकी उम्र भर की जो कमाई है वो ख़त्म हो गई, मगर उसी वक्त एक और ख्याल आता है कि गगरी तो दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। और वो छपा भी है, ये खाना है अबू गिल। तो आपने एक तो अपनी टॉक में उसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया। नहीं, तो करना चाहिए बिल्कुल। मेरी Exactly. मेरी गलती जो मेरी चीज गलती। आपके पास है आई, जी, जी। तो वो तो कुछ नजर में आनी चाहिए। माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो उर्दू में तर्जुमा है बिल्कुल कव्वाली इनकी गाई जा सकती है। और शुरू में तो मैंने कोशिश भी, मतलब मेरे दिल चाहा था कि ये कव्वालों तक पहुंचे, वही इट बिलोंग्स देयर, राइट। तो आप कुछ सुना दीजिए ना हमें। उर्दू में हाँ, मुझे इस वक्त ऐसे ज़बानी तो याद नहीं है। एक तो बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत वो पढ़ने वाला है। आप लोगों को तो पहले से सोचना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोचा? ये तो बड़ी गैर सूफियाना बात थी। महमूद साहब, आप इनकी शिकायत जो है वो अब पल्ले बांध लें और अगली दफ़ा ज़रूर करें। तो एनीवे जी, नहीं, इनको तो यहाँ होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया महमूद नहीं, मैं तो ऑर्गेनाइजर की गलती है कि आपको यहाँ नहीं बिठाया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल। अगली दफ़ा आप इनके तर्जुमों का ज़रूर जिक्र कीजिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत तर्जुमे किए, बहुत अच्छे तर्जुमे किए। तो जी तो इंशाल्लाह आपकी किताब यहाँ मिल रही हो तो लोग जो चाहते हैं समझना वो जाके खरीद। थोड़ा सा हम लोगों का ये मिस फॉर्चून हो गया कि वो वीडियो नहीं चला, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा डिसजॉइंटेड सा हो गया, क्योंकि ओरिजिनली तो महमूद साहब ने वीडियो और ऑडियो दोनों के साथ पूरी प्रेजेंटेशन देनी थी। तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ हो गई जो वीडियो नहीं चल सका। बहरहाल बहुत शुक्रिया महमूद जमाल साहब, इट वाज वेरी एनरिचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द ऑडियंस।